Alright, chalo. So let's then actually now talk about what is binomial theorem. Okay, binomial expansion or binomial theorem is basically this: a plus b the whole raised to n is equal to a plus b whole raised to n. Of course, here n belongs to natural numbers only. Belongs to natural numbers only. A plus b raised to n. Okay, is nc0 a raised to n. nc0 nc0 a raised to n. Then nc1 a raised to n minus 1 into b. nc2 a raised to n minus 2 into b square. ncr a raised to n minus r b raised to r. ऐसे करते 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 nc n minus 1 a raised to 1 b raised to n minus 1 plus ncn b raised to n, ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन. ओके एवरीबॉडी, there are a couple of things that you all have to make note of. This is the first term of the sequence of the expansion. Chalo, first term. Second term of the expansion. Third term of the expansion. ये कौन सा टर्म होगा? ये कौन सा टर्म होगा? Come on. जब ये nc0 है तब ये 1 है, जब ये nc1 है तब ये 2 है, जब ये nc2 है तब ये 3 है. तो ये में यहां पर ncr है, तो ये कौन सा टर्म होना चाहिए? दिस शुड बी dr plus 1. It must be the r plus 1th term of the expansion. r plus 1th term of the expansion. Okay, ये कौन सा टर्म होना चाहिए? ये वाला कौन सा टर्म होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए nth term of the expansion and n plus 1th term of the expansion. So key points to note: there are n plus 1 terms in the expansion for a plus b raised to n, which I think all of you all should have known all the while. A plus b whole square कितने टर्म्स है? 3. a square to ab b square 3 टर्म है. So जब स्क्वायर होता है 3, क्यूब होता है 4, n होता है n plus 1 टर्म. कोई बोल सकता था, पहले से ही बोल सकता. ओके, अच्छा. In any term, indices they will always add up to n only. ये देखो, इधर तो b है ही नहीं. चलो b लिखना है, लिख लो, b raised to 0. Sum of indices is always n. देखो जरा, sum of indices is always n. जो n minus 1 plus 1, n minus 2 plus 2, n minus r plus r, 1 and n minus 1. You want to write a raised to 0? चलेगा, right ना? Sum of the indices is always. अच्छा. Third, a के indices they decrease by 1 and b के indices they increase by 1. देखो, a के indices decrease by 1, decrease by 1, decrease. b के indices on the contrary increase by 1.
increase by 1, increase by 1, increase by 1. Key points. And you know what? Actually, as a matter of fact, आप ये सब जो मैंने लिखा है सब पहले से ही जानते थे. You knew it right from the beginning. Okay, because you already know a plus b whole square. You know a plus b whole cube. See, a plus b whole cube. How you write? A cube. Then you write 3a square b. देखो ना, a कम हो गया. ओके, b इधर b रेज़ टू 0 था, एक बढ़ गया 3ab square and b cube. देखो, sum of whole terms are there. Sum of the indices is always 1, always 3. Okay, and a के indices reduce by 1, b के indices increase by 1. अच्छा, everybody, ये a cube now fundamentally इधर से कैसे आता है? Okay, understanding of this expansion, right? When I write a plus b whole cube, it is actually a plus b into a plus b into a plus b, है ना? Right? A cube कहाँ से आता है? A cube कहाँ से आता है? A cube आता है when ये ब्रैकेट में से a gets multiplied by ये ब्रैकेट में से a and gets multiplied by ये ब्रैकेट में से a. A cube. ये a square भी कहाँ से आएगा? जब आप ये दोनों ब्रैकेट में से a लेता है और ये ब्रैकेट में से b, तो a इंटू b a स्क्वायर लेते हैं. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड में a, थर्ड में b, तो a स्क्वायर. Logically, the next thing is, why should I take a from first and second only and b from third only? Can I not take a from second and third and b from the first bracket? Yes, you can. And the coefficient here, everybody, coefficient here actually tells me the number of ways that it is possible for you to take a square. A cube was only possible in one way. A cube किधर से आएगा? A, बस, no chance, no option, no choice. But a square b के लिए क्या? A square b, a square b, a square b, तीन choices, तीन बार आता है, इसलिए ये 3. And by the way, all of you, this is very much what we are doing right now. A plus b whole cube is 3c0a. 3c0 is 3 factorial upon 0 factorial 3 factorial 1. ये बन गया होगा प्लस 3c1 a square into b raised to 1. 3c1 is from 3 write 3 numbers divided by from 1 write 1 number 3. So you get 3. That's it. A square. वैसे ही आप आगे बढ़ो, you will write 3c2. 3c1 must be 3c2 because NCR is NCF minus R. याद है कि नहीं तुम लोगों को? So 3 आएगा and you get 8b square and then 3c3. 3c3 is 3c0. So it's 1 only and you get 3. Now all of you all, ये जो terms आते हैं 3c0, 3c1, 3c2, nc0, nc1, nc2 and so on up to ncn. These are terms binomial coefficients. Binomial coefficients. Hello everybody, binomial coefficients. बराबर है? Okay. So these are all critical things that you all have to know. जब आप बुक में लिख रहे हो, पहले आप binomial expansion लिखो, मतलब ये फॉर्मूला लिखो पूरा.
और जो फॉर्मूला लिखा है जैसे मैंने लिखा T1, T2, T3, Tr+1, Tn, Tn+. Then you write down points to remember. There are n+1 terms, sum of the indices. A का इंडेक्स के लिए क्या होता है, B का इंडेक्स के लिए क्या होता है. These are binomial coefficients, लिख के रखो. Is that okay, everybody? Okay. अच्छा. One thing before we can actually move on to problems. Okay. Most important part of binomial expansion, right, is general term of the expansion. General term of the expansion. चलो. General term of the expansion Tr+1. जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे. एंड ये क्या है, ये r+1 से टर्म है, r से टर्म नहीं है. डोंट मेक दिस मिस्टेक. Tr+1 which is NCR a raised to n minus r and b raised to r. जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, ये भी फॉर्मूला करके लिख के रखो. These are the things that you all ought to know, okay, as far as binomial expansion or binomial theorem or binomial formula is supposed to be understood. So, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, मैं रब कर रहा हूं, and we will move on to the first set of problems. Elementary sum where we have to simply apply, और कुछ नहीं करना है. Okay, चलो. Okay, everybody, our first problem. चलो, let's talk about our first problem in this set. Everybody, चलो, let us talk about our first sum. Okay, problem. First one. 3x square plus 2y raised to 5. 3x square plus 2y raised to 5. Okay. तो पहले तो आप ना डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन लिखो. अब ये तो आप लोग मेरे साथ से लिख सकते हो. Okay. You need not wait to see the entire sum solved and then copy it down. So why don't you all write it along with me? Okay. This should be 5c0 3x squared raised to 5. बस. अच्छा, raised to 5 बोले तो कितने टर्म्स हैं ये, कितने टर्म्स हैं? ऑलराइट, आई थिंक देयर आर 6 टर्म्स इन ऑल. ओके, प्लस 5c1 3x squared raised to 4 and 2y raised to 1. Correct. Plus 5c2 3x squared raised to 3 2y raised to 2. Plus 5c3. एक्चुअली मैं अभी इधर से ऐसे जा रहा हूं. ओके, एंड 5c3 it will be 3x square raised to 2 and 2y whole cube. हमेशा याद रखना, when you all write this all of you all, कहीं पर भी किधर भी तुम लोग थोड़ा मिस हो जाओ,
NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 ये तो नहीं, इसमें तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमेशा याद रखना जो NCR लिखते हो ना वही नंबर इधर दिखना चाहिए, B रेज टू दिखना चाहिए। और मोमेंट यू से ये नंबर इधर दिखना चाहिए तो 5 माइनस ये इधर दिखना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ द इंटाइज ऑलवेज 5। समझ रहे हैं तुम लोग एवरीवन? ओके, दिस इज बायनोमियल एक्सपेंशन, और कुछ नहीं है। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्लियर। देन और क्या, इधर से आगे जाओ, सो दिस विल बी 5c4 3x squared raised to 1 2y raised to 4 and last will be 5c5 2y raised to 5। ऐसे लिखने के पीछे मेरा एक रीजनिंग भी है। ओके, you please understand everybody that these binomial coefficients, now if I have to find out their values, do you realize ये दोनों सेम वैल्यू, ये दोनों सेम वैल्यू और ये दोनों सेम वैल्यू। So I am going to first actually want to find out binomial coefficient values phi c equal to phi c5 and I believe it's 1। आप भी देखो, 5 factorial upon 0 factorial 5 factorial, that is 1 only। 5 factorial upon 5 factorial 0 factorial, that's 1 only। Phi c1 should be phi c4 should be 5 only। Start from 5, write one number, divided by, start from 1 and write one number, that's fine। Phi c2 should be phi c3 and I am going to get phi c2 मतलब start from 5, write two numbers, divided by, start from 2 and write two numbers, 10। ये कोएफिशिएंट्स मालूम पड़ेगा, डन। अब आप थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं। ऑलराइट, देयरफॉर आई विल से 3x square plus 2y whole raised to 5। Okay, whole raised to 5 is what? 1 into, अच्छा, can I write 3 raised to 5 x raised to 10 plus 5c1 5 3 raised to 4 into 2 and x raised to 8 into y, x raised to 8 into y, correct है? Okay, then what next next will be, चलो, next will be 10 5c2 3 cube 2 square and x raised to 6 y square, then again 10 3 square 2 cube 3 square 2 cube x raised to 4 y cube x raised to 4 y cube, then we'll write 5। Okay, 3 into 2 raised to 4 x square y raised to 4 and last we will write 2 raised to 5 y raised to 5। I think that's fine। Okay, बाकी ये वैल्यूज तो आप ढूंढ ही सकते हो यार, वो तो मेरी जरूरत नहीं है उसके लिए। ऑलराइट, आई थिंक आई कैन राइट इट डाउन। फाइनल आंसर वैल्यूज निकाल के लिख सकते हो। शुड बी, चलो, शुड बी एनीवे लिख देते। 343 x raised to 10, ये 10 हो गया 81, 810 x raised to 8y, फिर 27 4s are 108 0 x raised to 6 y square, then नेक्स्ट वाला क्या होगा 9 8 72
x raised to 4 y cube, फिर 5 2s are 10, 5 2s are 10, 2 क्यूब बचता है, 8 3s are 24, 240, x square y raised to 4 and plus 32 y raised to 5. ये हो गया आपका एक्सपेंशन कंप्लीट. I wonder whether all of you all have actually observed this. As far as binomial coefficients are concerned, do you see binomial coefficient इधर 1 था, 5 हो गया, मतलब 1 से बड़ा वो 5, 5 से और बड़ा वो 10, 10 पे 10 ही रहा, फिर 5 हो गया, फिर 1 हो गया. ये 1 है ना? I wonder whether you all see a trend. ये first term का binomial coefficient always 1 रहेगा, because whatever C0 will be 1 only. So 1 के बाद it will go up, rise. Then एक बार maximum आ गया, then it will come down, and last one again will be 1 only. ये एक pattern है which I think all of you all should understand. It should be very easy for you all to realize it also. Okay, the binomial coefficients will increase somewhere in between. It will become maximum, then it will decrease and reach back to 1. ठीक है, चलो, right. This sums done. Let's move on to the next question. Okay, next one. Once again, everybody, you all will give me company. Write it down along with me only. Okay. So the next problem is x square minus y cube by 2 raised to 4. तो ऑल इन ऑल मैं क्या करता हूं, ये x square minus y cube by 2 raised to 4 के लिए मैं ऐसे करता हूं. Can I write this as x square plus minus y cube by 2 raised to 4? So it becomes a plus b raised to n again. Nothing much, yeah, nothing great. Okay, so let's write down. Come on, you don't have to bother. Okay, you can say this is going to be. Come on, write down the binomial coefficient as this. This is a, minus y cube by 2 is b. Let's write down. Come on, 4c0 x squared raised to 4. That's it. Then 4c1 x squared raised to 3 and minus y cube by 2 raised to 1. Then 4c2 x square raised to 2 and minus y cube by 2 raised to 2. Then you know ना, मैं ऐसे लिखता हूँ नीचे. Alright, go down. अच्छा, 4c2 के बाद फिर आएगा 4c3. अच्छा, 4c3 ऐसे लिखूं, इधर लिख दूं 4c3 x squared raised to 1 minus y cube by 2 raised to 3 and last क्या होगा रे, last होगा 4c4 and only minus y cube by 2 raised to 4. You know na, these two are equal. You know these two are equal and this is all by itself. ठीक है, चलिए डन है. तो अब जरा जल्दी से बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज निकालो. बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज मैं इधर ही कर रहा हूं. ओके, आई एम गोइंग टू से 4c0 is 4c4 which is 1. 4c1 is 4c3 which is 4 and 4c2, the sole exception, 4c2 is
Start from 4, write two numbers. Start from 2 and write two numbers. 6. Once again, please understand all of you all. ये 1, ये 4, ये 6. वापस 4, वापस 1. So it's like 1, 4, 6, 4, 1. Somewhere in the middle, it is attaining its maximum, its peak. Anyway, just let's not bother much. Now, one important thing. अपना ये plus minus y cube by 2 था, है ना? Plus minus y cube by 2 raised to. Everywhere minus y cube by 2 raised to. अच्छा, can I say raised to 1? मतलब ये minus sign होने वाला है. Raised to 2, this plus sign will be retained. Raised to 3, this will become minus. Raised to 4, retain the plus sign. Matlab, isn't it like this? The terms are basically the same only, it's only the sign that is changing. Had it been plus here, plus y cube by 2, it would have been these terms only. All positive. Now it has become positive, negative. Acha, how? Exactly like that only, like I said. Positive, negative. Positive, negative. Positive. Expansion is over. So that means, if I ever want you to write a minus b raised to n, are you think the same way as you wrote for a plus b raised to n by? Alright, except that you have to write alternate positive, negative terms. That's it. ज़्यादा कुछ मस्ती करने की जरूरत नहीं है. Just go ahead, the same normal way, regular way, and get to your expansion. Just that you have to maintain positive, negative, positive, negative, positive, negative, S. Till where the expansion goes. No problem. That's your right answer. Have all of you all understood me? Okay. So let's write down the complete answer now. Come on. Shall I say this is now going to be 1, then x raised to 8 minus 4 x raised to 6 y cube plus 6 x raised to 4 and y raised to 6 okay, 1 minute, y cube upon 2 I okay, y raised to 6 upon 4 minus 4 x square y raised to 9 upon 8, and last term will be plus y raised to 12 upon 16, y raised to 12 upon 16. So final answer will be x raised to 8 minus 2x raised to 6y cube plus 3 by 2 x raised to 4 y raised to 6 minus half x square y raised to 9 plus 1 by 16 y raised to 12. Chalega? That's your expansion. Clear, everybody? Fantastic. Okay, that's what it is. Right? Okay. चलो एक और सम करते हैं फटाफट. Okay. Let's not waste time. Let's write one more sum here based on direct expansion. Okay. The sum is, everybody, good problem. Root 5 plus root 2 raised to 6 minus root 5 minus root 2 raised to 6. Okay, चलो अब आप ही बताओ इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे? 7 टर्म होंगे, 6 है तो the number of terms will be 7, and this
all of you all, won't it be the same terms that are there in this expansion? सिर्फ क्या है, alternate positive negative positive negative positive negative होगा, हाँ या ना? तो मैं थोड़ा अगर सोचने लगूं, shall I say, कुछ टर्म्स दोनों एक्सपांशन में से कैंसिल हो जाएंगे भाई, और कुछ टर्म्स डबल हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट टर्म इन दिस एक्सपांशन 6c0 √5 raised to 6, इधर भी 6c0 √5 raised to 6 कैंसिल, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, आप सब्ट्रैक्ट करोगे गया। ओके, तो मैं फर्स्ट टर्म लिखता ही नहीं हूं, लेट्स नॉट राइट इट ऑल। अच्छा, सेकंड टर्म का क्या होगा? चलो इधर सेकंड टर्म क्या होगा बताइए सेकंड टर्म क्या होगा? 6c1, आगे कम ऑन, 6c1, सो √5 raised to 5 होगा, √2 raised to 1 होगा, वही टर्म इधर भी आएगा बट विद अ माइनस साइन, then that minus along with the outside minus will become plus, so it becomes double that. So if you all are all with me on the thinking part, everybody, can I take directly, आप लिखो इसको twice, और मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपको पहले से ही बोला कि मुझे लग रहा है कि कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे और कुछ टर्म जो है वो डबल हो जाएंगे। ओके, सो डबल होने वाले कौन से टर्म्स होंगे? फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा, सेकंड टर्म डबल होगा, तो सेकंड टर्म लिखो भाई, सेकंड टर्म होगा 6c1, सेकंड टर्म 61 ही होगा, फर्स्ट टर्म 60, सेकंड टर्म 61 होगा। हाँ, 61 क्या? √5 raised to 5, √2 raised to 1। याद है ना तुम लोगों को, मैंने बोला है भी थोड़ी देर पहले, अगर कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, 61 लिखा ना तो यही 1 इधर लिखना चाहिए, राइट टर्म, एंड सम ऑफ द इंडाइजल मस्ट बी 6, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, 61 एडिटिव हो गया, 62 कैंसिल होगा, मेरे हिसाब से 62 इधर जो होगा इधर भी वही आएगा विद द सेम साइन, सब्ट्रैक्ट होगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, दैट मीन्स 6c इवन नंबर सब कैंसिल होंगे, और 6c ऑड नंबर जो होगा वही एडिटिव होगा, और वही आपको आपका आंसर देने वाला है। Is that funda, is that idea getting into your minds, everyone? Yes. So I will write 61, then I will directly move on to 63. 63 क्या? √5 raised to 3 होगा, क्योंकि √2 raised to 3 है भाई, ठीक है, डन। 65 3 हो गया तो 65 आना चाहिए, so 65 लिखेंगे, 65 √5 raised to 1 and √2 raised to 5, and matter closes there. मैं I hope all of you are, I am taking certain things for granted कि भाई आपको बिल्कुल समझ में आया ही होगा। That is my assumption, and I hope my assumption is right. Okay, I have not written down the entire expansion for this, and then verified and thought कि भाई हाँ ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये नहीं कैंसिल नहीं होगा, ये ऐड होगा, वो सब मैंने दिमाग में कर लिया। होपफुली आप लोगों को भी दिमाग में करने को पॉसिबल है। अरे हाँ कि ना? Now go ahead. Now you know the terms what you have to find out. So you have to simplify the same way, same old way. Binomial coefficient. Write down 61 must be 6. Nothing to solve.
63 must be start from 6, write 3 numbers. Start from 3, write 3 numbers. 3 to 6 gone, 20. 65, oh, 65 is 61. Wonderful, wonderful. So what we get? We get, everybody, we get 2 into 61 is 6. Root 5 raised to 5. रूट 5 5 बार दिख रहा है मेरे को, रूट 5 5 बार दिख रहा है, तो दो रूट 5 will give you 5 5. I think 25 root 5 होगा into root, correct, plus 20 into root 5 cube 5 root 5, root 2 cube 2 root 2, done bhai, very good, plus 65 6 root 5 and root 2 root 2 root 2 root 2 root 2 5 बार, so 2 to 4 root 2 4 root 2. ये मेरे हिसाब से सारे रूट 10 है, देखो ये रूट 10 है, ये रूट 10 है, ये रूट 10 है, so these are all like terms with all of them being root 10. So can I say this is essentially 2 into root 10 करते हैं तो 150 root 10, then ये होगा 20 and 10 200 root 10, और ये होगा 24 root 10. Oh, fantastic, आंसर आ गया. So this is going to be how much now? 374 root 10. I think the final answer will be 748 root 10. First class should be your final answer. ठीक है? Everybody, is this all right? Please make a note of it quickly.